Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about the entitled theme, Unifactor or One-Factor Theory of Intelligence. Dear students, Unifactor or One-Factor Theory of Intelligence was basically propounded by one of the eminent psychologists, namely ALFRED BINET. ALFRED BINET was a French psychologist born on 1857 and died on 1911 in Paris. He is known as father of intelligence testing, as he developed the first intelligence test in 1905. Apart from it, ALFRED BINET has also given the concept of mental age. ALFRED BINET was the French psychologist जिसकी पैदाइश 1857 में पेरिस में हो गई and he died 1911. ALFRED BINET is being considered the father of intelligence testing क्योंकि ये ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने साइकोलॉजी में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया in year 1905. Apart from it, ALFRED BINET has also given the concept of mental age. As we know that mental age is basically the mental maturity possessed by an individual. यानी कि एक इंडिविजुअल में कितनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कितनी मेंटल मैच्योरिटी है, that depicts the individual's mental age. As per the ALFRED BINET, हर एक इंडिविजुअल की एक जैसी मेंटल एज नहीं है. It means every individual differs in terms of cognitive maturity. किसी की मेंटल एज ज़्यादा होती है और किसी बच्चे की मेंटल एज कम होती है. जिस बच्चे की मेंटल एज ज़्यादा होती है, आई मीन टू से यू मेंटल मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, उसकी अचीवमेंट भी ज़्यादा होती है. और जिस बच्चे की मेंटल एज कम होती है और उसकी अचीवमेंट भी कम होती है, इट मीन्स mental age is directly proportional to the achievement. More will be the mental age, more will be the success in life. Dear students, in today we will focus one of the important theory that is entitled as Unifactor Theory of Intelligence. यूनिफैक्टर थ्योरी को हम कई नामों से जानते हैं. इस थ्योरी को हम सिंगल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं या वन फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल गिव द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ यूनिफैक्टर थ्योरी which is propounded by French psychologist, namely ALFRED BINET. According to ALFRED BINET, we all have a single general factor of intelligence that is applied in all tasks, such as household tasks, cooking, sweeping, cleaning, washing clothes, daily routine-based tasks, bathing, dental hygiene, nail hygiene, taking meals, academic tasks such as teaching and learning. Dear students, why unifactor theory is
known as यूनिफैक्टर थ्योरी। आल्फ्रेड बिनेट ने जो थ्योरी दी है इसे सिंगल फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी क्यों कहते हैं? एज पर द आल्फ्रेड बिनेट, जिसे हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहते हैं, he emphasizes that in all the tasks there is involvement of one factor. That factor is known as general factor. I mean to say you general intelligence. यानी कि जो भी हम काम करते हैं, whatever the tasks performed by an individual, हर किसी टास्क में हर कोई एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है उसमें जनरल एबिलिटी यूज होती है। चाहे एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड टास्क परफॉर्म करता है, इन ऑल हाउस होल्ड रिलेटेड टास्क देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, लाइक हाउस होल्ड रिलेटेड टास्क, कुकिंग, स्वीपिंग, क्लीनिंग, washing clothes. It means whatever the task is performed by an individual, there is involvement of general intelligence. हर किसी काम में जनरल फैक्टर यूज होता है। Dear students, apart from the household related tasks, if an individual has to perform daily routine based tasks, तमाम डेली रूटीन बेस्ड टास्क्स में भी जनरल फैक्टर यूज होता है। देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल फैक्टर इन ऑल द टास्क्स, लाइक डेंटल हाइजीन, इफ समवन हैज टू ब्रश द टीथ, देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, और मेंटेनेंस ऑफ नेल हाइजीन, नाखून साफ रखना या नाखून काटना, तो उस टास्क में भी जनरल एबिलिटी यूज होती है। टेकिंग मील्स, खाना खाना, उसमें भी जनरल इंटेलिजेंस यूज होती है। अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड रिलेटेड टास्क और डेली रूटीन बेस्ड टास्क, even if an individual has to perform academic related tasks, academic related tasks means teaching and learning. जब एक लर्नर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ना है, सोशल स्टडीज पढ़ना है, चाहे बायोलॉजिकल साइंस पढ़ने हैं, फिजिकल साइंसेस पढ़ने हैं, हर किसी टास्क में जनरल एबिलिटी यूज होती है। So on the basis of that, Alfred Binet has propounded the theory which is known as unifactor theory or one-factor theory of intelligence. Alfred Binet therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. For instance, general intelligence helps us to solve the mathematical problems, language related problems, or visual and memory related problems. नटशल में हम कह सकते हैं कि जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, या हम इसे कहते हैं वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस जो है ये हर एक टास्क में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कोई भी टास्क हम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट द जनरल इंटेलिजेंस। अगर हमें मैथमेटिकल टास्क्स परफॉर्म करने होंगे, या इफ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, सो देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक जनरल इंटेलिजेंस के बुनियाद पे सॉल्व कर सकते हैं। दिस वाज द आर्गुमेंट which is supported by French psychologist namely Alfred Binet.
अपार्ट फ्रॉम द मैथमेटिकल टास्क्स, जनरल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी होती है, विजुअल टास्क्स में भी इस्तेमाल होती है और मेमोरी रिलेटेड टास्क्स में भी इस्तेमाल होती है। यानी कि इफ वी हैव टू परफॉर्म द टास्क्स, दोज टास्क्स आर कॉल्ड द विजुअल टास्क्स vis-a-vis द मेमोरी रिलेटेड टास्क्स। हर एक एक्टिविटी में, हर एक टास्क में जनरल इंटेलिजेंस यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, विजुअल रिलेटेड टास्क्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, विजुअल रिलेटेड टास्क्स आर दोज टास्क्स where there is the involvement of the senses, particularly the sense of the sight. Dear students, as we know that senses are called the gateways of knowledge. It means we receive the knowledge with the result of sensory organs. And we have 5 different senses, like sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of touch, and sense of taste. Out of the 5 senses, sense of sight is being considered one of the important senses, क्योंकि जो sense of sight है इसकी ज़्यादा significance है out of the other senses। जो सेंस ऑफ साइट है ये हम विजुअल टास्क्स में इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स इफ वी हैव टू परफॉर्म एनी विजुअल टास्क, एवरी विजुअल टास्क इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ साइट। इसीलिए जो ब्लाइंड पॉपुलेशन है, ब्लाइंड पीपल आर दोज पीपल हु हैव डिफेक्टिव सेंस ऑफ साइट, या ये वो पॉपुलेशन है जिनमें 100% विजुअल लॉस है। तो हम कह सकते हैं जो ब्लाइंड पॉपुलेशन है दे कैन नॉट परफॉर्म द विजुअल टास्क्स। इसीलिए जो ब्लाइंड पीपल है वो किसी एक्टिविटी को या टास्क को परफॉर्म अदर सेंसेस से करते हैं, लाइक सेंस ऑफ हियरिंग, एस्पेशली द सेंस ऑफ टच। Now, dear students, we will focus how with the help of sense of sight we will perform the visual task. For example, word recognition. अगर हम बच्चे को अल्फाबेट्स दिखाएंगे, लेटर्स दिखाएंगे, let it assume letter A, letter B, letter C, letter D, लेटर ई, सो ऑन एंड सो फॉर, तो हम चेक कर सकते हैं उसकी एबिलिटी को, वो सही तरीके से ऑल लेटर्स को रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं। दैट इज वाई इंटेलिजेंस इज ऑल्सो डिफाइंड। पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, तो हम बच्चे में देख सकते हैं उसमें रिकॉग्नाइजेशन पावर है कि नहीं, या अपार्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लेटर्स और वर्ड्स, हम बच्चे को डिफरेंट पिक्चर्स देंगे, डायग्राम्स दिखाएंगे, तो हम देख सकते हैं कि वो डिफरेंट पिक्चर्स को सही तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाता है कि नहीं, या डिफरेंट पिक्चर्स में वो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज ढूंढ पाता है कि नहीं। दीज आर कॉल्ड द विजुअल टास्क्स। या अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम पेंटिंग बच्चे को दिखाएंगे, वो पेंटिंग को सही तरीके से समझ पाता है कि नहीं, उसे पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, वो उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं। सो दीज वर द वेरियस विजुअल टास्क्स विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय द चाइल्ड और एनी इंडिविजुअल। जनरल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मेमोरी रिलेटेड टास्क्स में भी होता है। मेमोरी सिंपली मीन्स पावर ऑफ रिकॉलिंग एंड रिटेनिंग कैपेसिटी। एक इंडिविजुअल में पावर ऑफ रिटेनिंग और पावर ऑफ रिकॉलिंग कैपेसिटी कितनी है, तो हम कह सकते हैं इसकी मेमोरी उतनी है। कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है
जिसमें पावर ऑफ रिटेनिंग और रिकॉलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एन अमेरिका एक ऐसा शख्स था, देयर वाज वन ऑफ द पर्सन्स, जो भी गाड़ी उसने लाइफ में देखी थी वो बराबर कहता था ये गाड़ी मैंने कहां पर देखी थी और इस गाड़ी का नंबर क्या है और मैंने कब देखी है। जिस गाड़ी का नंबर उससे पूछते थे वो बराबर उस व्हीकल का इंजन नंबर बताता था, प्लेट नंबर बताता था और किस डेट पे उसने देखी है और कब देखी और कहां पर देखी है। इट मीन्स दैट उसकी मेमोरी जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी। या कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है जो बिना डायरेक्टली देख के फोन नंबर डायल करता है, चाहे उसे फोन नंबर रिलेटिव को डायल करना होगा, किसी ऑफिस में डायल करना होगा, उसे ज़मानी फोन नंबर्स याद होते हैं। सो इट ऑल्सो कम्स इन द डोमेन ऑफ मेमोरी एबिलिटी। एक इंडिविजुअल की मेमोरी दूसरे इंडिविजुअल से नहीं मिलती जुलती है। दैट इज वाई नंबर ऑफ लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड there is one of the branches of psychology that is known as differential psychology. Differential psychology believes on individual differences. It means no two individuals are alike. Every individual is different in terms of tastes, in terms of interests, in terms of cognitive competencies such as thinking, reasoning, logic, memory, so on and so forth. According to this theory, if a person is proficient in one area, she should be proficient in other areas as well. For instance, if a student is average intelligent, then he would be average in decision making, average in studies, average in co-curricular activities. ALFRED BINET believes if there is the person who is proficient in one field, एक व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट है, स्किल्ड है एक फील्ड में, तो वो दूसरे फील्ड में भी कॉम्पिटेंट और स्किल्ड होगा। अगर एक इंडिविजुअल एक फील्ड में कमजोर है तो वो दूसरे फील्ड में भी कमजोर होगा। फॉर इंस्टेंस, इफ द इंडिविजुअल, आई मीन टू से यू, इफ द स्टूडेंट इज एवरेज इंटेलिजेंट, एक स्टूडेंट जो है वो एवरेज इंटेलिजेंट है, as per the ALFRED BINET's यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो वो बच्चा एवरेज होगा डिसीजन मेकिंग में भी, वो एवरेज होगा स्टडीज में भी, वो एवरेज होगा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी, वो एवरेज होगा अदर एक्टिविटीज में भी। सो दिस वाज द आर्गुमेंट गिवन बाय ALFRED BINET in one of the important theory that is known as unifactor theory or monofactor theory of intelligence. Now dear students, we will discuss criticism part of the theory, क्योंकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्सेंसस नहीं की है ALFRED BINET के स्टेटमेंट से। They have highly criticized the theory. Now we will focus one by one what are the basic criticisms done by the various psychologists against the theory which is known as unifactor theory or single factor theory of intelligence. Number one, the theory has been rejected as it laid emphasis that if a person is proficient in one area, he should be proficient in other areas as well. For instance, if a student is proficient in maths, may not be proficient in language subject. Dear students, पहला जो prominent criticism यूनिफैक्टर थ्योरी या हम कह सकते हैं मोनोफैक्टर थ्योरी का हुआ है, वो इस तरीके से हुआ है क्योंकि ALFRED BINET believes अगर कोई इंडिविजुअल एक एरिया में प्रोफिशिएंट है, स्किल्ड है, कॉम्पिटेंट है, वो दूसरे एरिया में भी कॉम्पिटेंट होगा। लेकिन बहुत से साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल एक फील्ड में कॉम्पिटेंसी रखता है तो वो दूसरे फील्ड में भी रखता होगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लर्नर की बात करेंगे, एक लर्नर जो है वो मैथमेटिक्स में कॉम्पिटेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी कॉम्पिटेंट होगा। एज पर द रिसर्चिकल रिपोर्ट्स आर कंसर्न्ड, बहुत से ऐसे बच्चे जो मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उन बच्चों में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी या अदर फील्ड्स में वो एक्सेल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक स्ट्रांग क्रिटिसिज्म यूनिफैक्टर थ्योरी को हो गया। नंबर सेकंड, द थ्योरी हैज आल्सो बीन रिजेक्टेड as it laid emphasis that if a person is weak in one field and should be weak in another field as well. For example, the student who is weak in studies may not be weak in sports and games. Dear students, second important criticism against the theory, क्योंकि इस थ्योरी का मानना है it relies, अगर कोई इंडिविजुअल एक फील्ड में वीक होगा तो वो दूसरे फील्ड में भी वीक होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। एक बच्चा जो है वो एक फील्ड में वीक है तो वो दूसरे फील्ड में भी वीक होगा। साइकोलॉजिस्ट्स डज नॉट आल्सो पॉजेसेस कंसेंसस विद इट। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में वीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो वीक स्पोर्ट्स एंड गेम्स में होगा। Dear students, keeping in view the facts, ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत पीछे है लेकिन खेल कूद में वो आगे है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो खेल कूद में पीछे है लेकिन पढ़ाई में आगे है। So the theory has been also rejected. The various psychologists does not also possesses the consensus with the statement. Number third, the theory has been criticized as it believes that there is only one factor of intelligence, while as on the other hand, various other psychologists believe on n number of factors of intelligence. For instance, two-factor theory given by Charles Spearman. The theory has been also rejected, keeping in view the general factor of intelligence. क्योंकि अल्फ्रेड बिनेट का मानना है हर कोई टास्क जो है हम परफॉर्म करते हैं एक फैक्टर से, यानी कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। तो हाईली क्रिटिसाइज इसे किया स्पेशली वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट्स, namely Charles Spearman. Charles Spearman has propounded the theory that is known as two-factor theory of intelligence. तो इसीलिए चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा है there is not only one factor of intelligence, there are more than one factor of intelligence. जैसे कि उसने ऑलरेडी two-factor theory का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी कि जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी। या और भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं दो से भी ज़्यादा फैक्टर्स है, लाइक थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नटशल में हम कह सकते हैं वेरियस साइकोलॉजिस्ट्स डज नॉट हैव कंसेंसस विद द वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उनका मानना है देयर आर मोर देन वन फैक्टर्स, इट मे बी 2, 3, 4, 5, 6, so on and so forth. Dear students, this was all about the today's lecture. In next lecture, we will focus on another important theory that is entitled as group factor theory of intelligence. Group factor theory of intelligence is entitled by E.L. Thurston. Thurston was basically American-born psychologist. तो उस थ्योरी के रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Hopefully, I believe that you will be connected with the channel entitled as Grow Strong. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.